So look over here. We were doing resolving of vectors. Okay, 1 minute. Let me check that this is working. Yeah. So we were doing resolving of vectors. We calculated like how to find the components of vector when they are aligned at some angles with respect to x-axis and y-axis, isn't it? Is that clear? So look over here. Let us have once again a quick recap of this, and then we'll move ahead. Okay. So resolving of vectors. Now, if I have क्या बोला था कि अगर मान ले तेरे पास x एक्सिस है और y एक्सिस है, ठीक, then if I draw any kind of a vector making some angle theta with the x axis, then it will have two components, है ना, one along x direction, one along y direction. This length we will call it as ax. If this is vector a, I call it as x component of a, and I call this as y component of vector a. Are you able to get me? And ax was given as modulus of vector a cos theta, and ay was given as modulus of vector a sin theta. क्या मेरी बातें तुम्हें समझ में आ रही है? Are you able to get me? ठीक है, लेकिन अगर मान लो जैसे अगर तुमसे कोई पूछे कि अगर रिजल्टेंट निकालना है तो दैट इज सिमिलर टू वेक्टर ए इटसेल्फ. आर एबल टू गेट मी? अब ध्यान से देखो, इसको हम यूटिलाइज कैसे करते हैं, मतलब इसका मेन वर्क क्या है ना? तो सबसे पहली बात ध्यान से देखा जाए कि सर अगर मान लो, अब पॉइंट ये आता है कि इफ आई कंसिडर, चाहे इसी में मान अगर मान लो दिस इज एंगल थीटा, देन इफ आई कंसिडर फ्रॉम दिस साइड, यहां से भी तो अपन एंगल मान सकते हैं ना, है कि नहीं? तो माइक ऑन करो, कोई एक जन माइक ऑन करके रखो. यस. तो अगर दिस इज थीटा, सो आई कैन कॉल दिस एज बीटा. और ठीक, मेनली इसको अल्फा लोग लिखते हैं, थीटा इन टर्म्स ऑफ अल्फा ऐसे लिख देते हैं. सो see, if I measure from x axis it is going to be called as alpha, but if I measure from y axis it is going to be called as beta. Are you able to get me or not? अब ध्यान से देखा जाए कि हम लिखेंगे कैसे, अगर तुम ध्यान से सोचो तो if this is beta and if I can draw a triangle like this way, ठीक, then this length over here is nothing but modulus of vector a cos beta, isn't it? यही होगा. ठीक, और in terms of alpha, ax can be written as modulus of vector a into cos theta. अब ये तो एक नया अच्छा खासा रिजल्ट है ना, कि सर इफ आई कंसिडर x एक्सिस एंड इफ आई कंसिडर y एक्सिस एंड इफ यू टेक द मेजरमेंट फ्रॉम x एक्सिस एंड y एक्सिस, basically ay, which is written as a sin theta, can also be written as modulus of vector a sin theta, which will be also written as modulus of vector a into cos beta. And ax, which is written as modulus of vector a into cos theta, can be also written as modulus of vector a into sin beta. Are you able to get me or not? This length is what? Modulus of vector a into sin beta. क्या मेरी बातें तुम्हें समझ में आ रही हैं? तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं दोनों को, अगर ये cos थीटा है, ये cos बीटा है, और both of them are like base and height of a right angle triangle, so that must, if I just take their square and add them, then it must be equal to modulus of vector a or not. ठीक है, होना चाहिए. तो अपन लिख सकते हैं ना कि वेक्टर a इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ वेक्टर a cos थीटा i कैप प्लस मॉडुलस ऑफ वेक्टर a cos बीटा j कैप. क्या मेरी बात तुम्हें समझ में आई? So then I can write it as what?
in terms of resultant modulus of vector A. ध्यान से देखो, जैसे अपन ने कल बताया था कि you can write in terms of A cos theta and A sin theta. And if you know AX and AY, so look over here, this is AX and this is AY. So modulus of vector A is nothing but root under AX square plus AY square or not. होगा या नहीं होगा? इसका जो लेंथ होगा, that length is exactly equal to इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, बिकॉज इट इज राइट एंगल ट्रायंगल, है ना? तो तुम्हें क्या मिलेगा, ध्यान से देखा जाए तो यू विल गेट समथिंग मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए, पुट करो x which is a cos theta square, so which is modulus of vector a cos square theta, cos square अल्फा, हम थीटा को अल्फा की तरफ मान रहे हैं, प्लस modulus of vector a square cos square beta. मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर इधर सेंड कर दो तो क्या आएगा, इक्वेशन आएगा 1 is equal to nothing but cos square alpha plus cos square beta, which is one of the most important equation of physics, and this is called as angle resolution method. Is that clear? तो देखो, अपने पास अगर कोई भी वेक्टर है तो उसके दो कंपोनेंट होते हैं ax और ay, देन दैट वेक्टर अपन ने फॉर्मूला क्या क्या निकाला है, ax I cap plus ay j cap, where modulus of vector a is given as root under ax square plus ay square, and if I know ax and ay, then tan theta is also known, which is equal to tan alpha, which is ay by ax. So a vector can be also calculated if you know the two hands, like on the x-axis hand and on the y-axis hand. Are you able to get me? सबको समझ में आया? ठीक है? Yes. Others, tell me. ठीक है. चलो. So this was all about your considering. Basically, this was the method of considering something called as डायरेक्शन कोसाइंस. क्या बोलते हैं इस चीज को? Basically, the equation which we wrote, that cos square alpha plus cos square beta is equal to 1, it also suggests that my direction should be along which direction or not. अगर तुम्हें अल्फा मालूम है तो तुम्हें बीटा पता है, अगर बीटा मालूम है तो तुम्हें अल्फा पता है, तो तुम्हें मालूम है एक्चुअली में वेयर इज द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट, isn't it? So this is why how to write direction cosines, let us understand. So look over here, we know that r cos alpha, sorry, vector a cos alpha is my x component, isn't it? बताओ, यही होगा ना? तो तुम्हें cos alpha की वैल्यू पता है, this means cos alpha is equal to x by modulus of vector a, isn't it? And modulus of vector a क्या होगा, x by, if it is a three dimensional vector then it is ax square plus ay square plus az square, isn't it? तो देखो, in three dimensional space any kind of a vector this is drawn, okay, and this is vector a. So vector a can be written as, I'll write it as ax I cap plus ay j cap plus az k cap. यही होगा वेक्टर का फॉर्म, है ना? कोई भी वेक्टर तो ऐसे ही लिखते हैं ना, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, isn't it? अब ध्यान से देखो, तो ये वेक्टर एक्स के साथ कुछ एंगल बनाएगा अल्फा, वाई के साथ कुछ एंगल बनाएगा बीटा, और जेड के साथ कुछ एंगल बनाएगा गामा, है ना? तो क्वेश्चन अराइजेस that what are these angle alpha, beta and gamma? Basically these angles are called as direction cosines. क्या बोलते हैं इस angles को? Direction cosine, where cos alpha is given as formula this one. Similarly I can write cos beta. What will be my formula of cos beta? You saw that cos beta can be written as
vector A divided by modulus of vector A or not? Yes. So vector along y axis divided by, हम ऐसे लिख सकते हैं, vector along y axis, sorry, divided by modulus of vector A, which is ay root over ax square plus ay square plus az square. And similarly cos gamma, which is equal to az by modulus of vector A, which is az divided by root under ax square plus ay square plus az square. Is this clear or not, guys? मजा आया? तो देखो, मतलब अपने पास अपन ने पहले वेक्टर लिखा, देखो अपन ने क्या क्या सीखा, पहले वेक्टर कैसे लिखा जाता है, फिर पोजीशन वेक्टर कैसे लिखा जाता है, फिर अपन ने समझा हाउ टू राइट द displacement, means displacement vector, then how to write the vector, even vector is given and its theta and alpha are given, then how to write the vector in their form. And the third thing we got to know that what is these angles which can be considered with the different axes. Are you able to get me or not? And that's why these angles gives me a correct formula, and which we call it by a name of direction cosines. क्या बोलते हैं इसे अपन? Direction cosines. Is that clear? ठीक है, चलो तो आगे बढ़ा जाए. देख, तो अब पॉइंट आता है कि सर इसका यूज क्या है मेनली. तो देखो इसका यूज कैसे होता है. तो जैसे फर्स्ट आई डिस्कस फर्स्ट केस टू वेक्टर फॉर्म. ठीक है ना. Let's suppose I consider x axis and y axis. Okay, and okay, let us consider in a different way, थोड़ा सा, है ना, ताकि थोड़ा आसान लगे. I consider x axis and y axis like this way, and I have considered two vectors. One vector is along this way, one vector is along this way. ठीक है. This is vector A, magnitude 5 units, making 37 degree with the x-axis. This is vector B, magnitude 10 units, and making angle 53. Then question is simple: find the direction and magnitude of resultant vector. बताओ क्या. Find the direction and magnitude of the resultant. हाँ हाँ, क्या? पैरेललोग्राम रूल लगाओगे तो बनेगा क्या? दो अलग अलग डायरेक्शन है ना, पर इसमें एंगल काफी अलग दिया हुआ है ना. इनके बीच की जो एंगल है वो पता ही नहीं कितना डिग्री है. तो 60 डिग्री के, हाँ मतलब पैरेललोग्राम रूल लगा सकते हो. पर ये कितना हो रहा है देखो तुम, 7 3 10. हाँ 90 डिग्री निकाल सकते हो, बन सकता है, पैरेललोग्राम लॉ से भी बन सकता है. बट डोंट अप्लाई पैरेललोग्राम लॉ राइट नाउ.
अप्लाई करो ये कॉन्सेप्ट रिजॉल्विंग ऑफ वेक्टर्स। अब ध्यान से देखो, तो हमें एंगल दिया हुआ है तो हम इसको रिजॉल्व कर सकते हैं ना आराम से। वेक्टर ए का एक हैंड एक्स एक्सिस पे होगा, दूसरा हैंड वाई एक्सिस पे, इस डायरेक्शन में, है कि नहीं? एंड इस वेक्टर का, वेक्टर बी का एक हैंड इस डायरेक्शन में और दूसरा क्या इस डायरेक्शन में होगा या नहीं होगा? सेम ही रहता है लेंथ, एक्चुअली इसके बराबर रहना चाहिए। ठीक है, समझ में आई बात? तो ध्यान से देखो, इधर वाला जो हैंड है उसका वैल्यू कितना होगा? हमें मालूम है कि एक्स एक्सिस अगर ये एंगल थीटा तो दिस इज ए cos थीटा, सो मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इनटू cos 37। यहाँ पे क्या होगा? मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इनटू sin 37 और यहाँ पे क्या होगा? मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी इनटू cos 53। इधर होगा मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी इनटू sin 53। आर एबल टू गेट मी? ये होगा ना? समझ में आई बात, है कि नहीं? तो ध्यान से देखा जाए तो हाउ मच इज दिस वैल्यू? मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए cos 37 कितना होगा? ए की वैल्यू 5 है, cos 37 इज 4/5। याद है तुम्हें ट्रायंगल? क्या बताना पड़ेगा? अरे जिंदा हो सब, तो मर्जी। So this is 37, opposite side is 3, this is 4, this is 5 and this is 53। ये ट्रायंगल हरदम याद रखो, है ना? तो ध्यान से देखो, cos 37 is how much? 4/5, so 5 cancel which is equal to 4 units। b cos 53 is how much? 10, cos 53 is 3/5, so 5 2s are 10, 3 2s are 6 units। अच्छा, a sin 37 once again 5 into 3/5 which is equal to 3। एंड यहाँ पे b sin 53, b की वैल्यू कितनी है? 10 sin 53 is 4/5, so this is 10 into 4/5 which is equal to how much? 8 न्यूटन, 8 units। अब ध्यान से देखा जाए तो look over here, when I draw the resultant vector once again I'll draw on x and y axis, isn't it? ठीक है, एक मिनट। अब मैं ऐसा क्यों बोला कि ये इजी टास्क है? बिकॉज लुक ओवर हियर, सी, after resolving the vectors you can easily find the resultant x-axis and resultant y-axis or not. The first step was to resolve the vector. Second step was find the resultant horizontal component. And resultant vertical component। Second step क्या करोगे? रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल निकालोगे, ऑन रिजल्टेंट क्या निकालोगे? वर्टिकल। जैसे ही रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल मिल गया, रिजल्टेंट वर्टिकल मिल गया, तो तुम्हें रिजल्टेंट वेक्टर मिल जाएगा ना। तो ध्यान से देखो, इधर इसका रिजल्टेंट क्या है? इधर का डायरेक्शन है 6 और इधर का डायरेक्शन है 4, जिसका मतलब अपोजिट डायरेक्शन में है तो सब्ट्रैक्ट होगा, तो इधर का वैल्यू आएगा तुम्हारा 2 यूनिट्स, इजंट इट? नेट नेट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना आएगा? 2 यूनिट्स। क्या मेरी बातें तुम्हें समझ में आ रही है? एंड नेट वर्टिकल क्या होगा? इन दोनों को ऐड कर दो सेम डायरेक्शन में, 8 3 11, सो दिस इज माय नेट वर्टिकल कंपोनेंट, है ना? सो नेट रिजल्टेंट वेक्टर अपन का जो आएगा दैट विल बी इन सेकंड क्वाड्रेंट, नॉट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। एंड दैट रिजल्टेंट, if this angle is theta, I call it as r vector। r vector will be what? 2 minus I cap minus 2 I cap plus 11 j cap। That's your answer। So magnitude इसका क्या होगा? रूट अंडर 2 स्क्वायर which is 4 plus 11 स्क्वायर which is 121, तो कितना हुआ ये? रूट अंडर 125। कितना आएगा ये आंसर? देख लेना, that's your task to solve। And look over here, it is making some angle theta with the horizontal, so tan theta will be vertical by base, vertical is 11 and base is how much? Minus 2, because it is in opposite direction। But if you are considering theta directly, you just write 2 over here,
Is that clear? So this is my angle. This is your answer. Is that clear? ठीक है शुक्ला जी समझ में आया शुक्ला जी सो रहे हैं ठीक है so this was the way to understand how to handle the two vector form means two vectors are given and you were told to find the resultant what you will do find the net horizontal find the net vertical and then just write the resultant vector as nothing but net horizontal I cap plus net vertical j cap and then you know the magnitude and you know the angle where this resultant is acting एक और एग्जांपल लेते हैं लेट अस टेक थ्री वेक्टर फॉर्म ठीक है x axis y axis okay let us take a three vector form बोल रहा है 1 मिनट ठीक है बोल रहा है कि आई हैव अ वेक्टर ऑन दिस डायरेक्शन एक वेक्टर ऐसे ओरिजिन पे ऐसे पॉइंट आउट कर रहा है और जो तीसरा वेक्टर है कुछ इस तरह से प्रेजेंट है ना once again same thing 5 Newton 5 Newton 10 Newton okay and this angle is 37 but this angle is 53 now find the resultant magnitude of resultant vector find the direction and magnitude of the resultant vector do it fast एक मिनट फ्लिपर लगाऊंगा विंडो पे डू इट फास्ट who else is joining निरंजन इसको क्या क्या करूं मतलब मैं ज्वाइन कर दूं या फिर क्या करूं अच्छा बताओ क्या होगा इसका आंसर जल्दी जल्दी 2 मिनट के अंदर बताओ अभी तक नहीं आया किसी का आंसर अच्छा इस चीज में एक चीज बताता हूँ देखो पहली बात जो हम रिजॉल्व कर रहे हैं वो ओनली फॉर दोज वेक्टर्स विच आर स्टार्टिंग फ्रॉम ऑरिजिन तो तुम ये जो वेक्टर ये जो एरो यहाँ पे पॉइंट आउट कर रहा है ना ये एरो नहीं रहना चाहिए मतलब जब भी हम वेक्टर को रेजोल्यूट करेंगे अपन को कंसिडर करना होगा दैट the vector's tail should be always present on the origin. That is one of the most important consideration of this whole thing which we are discussing right now. ध्यान से देखो, this is my one of the vector 5 Newton. So I'll just bring it in forward direction.
then the tail will coincide with the origin or not. ये हो गया अपन का 5 न्यूटन है ना. दूसरा है 10 न्यूटन और तीसरा है, मान लो ये दिस इज 10 एंड दिस इज 37 और ये कितना है 5. ठीक, एंड दिस इज 53. क्या मेरी बातें तुम्हें समझ में आ रही हैं? तो ध्यान से देखो, इस 10 न्यूटन का एक कंपोनेंट होगा एंड ऑन द y एक्सिस एंड x एक्सिस बोथ इस 10 न्यूटन का एक कंपोनेंट होगा. मान लो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस. तो 10 न्यूटन का इसके ऊपर x कंपोनेंट कितना होगा 10 cos 37 और इधर हो गया 10 sin 37 है ना. ये 5 न्यूटन है. 5 न्यूटन का एक कंपोनेंट होगा ये 53 वाले का, एक इस डायरेक्शन में होगा और एक इस डायरेक्शन में है ना. तो ध्यान से देखो, द अटैच्ड एंगल इज cos कंपोनेंट, सो दिस विल बी 10 cos 53 और इधर क्या है 10 sin 53. और फिर से वो ट्राइंगल याद करो cos 37 sin 57. तो देखो मैं डायरेक्टली लिख रहा 10 sin 37 इज 3/5. तो क्या है 5 2 जा 10 3 2 जा 6. तो बेसिकली इसकी वैल्यू कितनी आई 6 न्यूटन. 10 cos 53 इसको सॉल्व करो, दैट इज 10 cos 53 इज, ध्यान से देखो cos 53 इज 3/5 into 3/5. तो 5 2 जा 10. This is once again equal to how much Newton? 6 Newton. So 10 cos 37 को सॉल्व करो. 10 cos 37 is 4/5. तो कितना हुआ 8 न्यूटन. और 10 sin 53 को सॉल्व करो तो कितना आएगा 10 sin 53 is how much? देखो तो 4/5. So 10 into 4/5 which is equal to 8 newtons. Are you able to get me? What you saw when I take the net vertical component is 0 or not? Is equal to how much? 0. इसका मतलब नेट रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो सिर्फ और सिर्फ किस एक्सिस पे लाई करेगा बेटा? एक्स एक्सिस पे लाई करेगा. किस एक्सिस पे? एक्स एक्सिस पे. तो मान लो, अच्छा हम अब जब हम नेट रिजल्टेंट और नेट वर्टिकल का बनाएंगे तो सिर्फ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ही आएगा. तो ध्यान से देखो, दिस इज माय नेट हॉरिजॉन्टल and this is my net vertical component. Are you able to get me? Now after finding that net vertical is how much? 0. Well, net horizontal is 8 plus 5 13. 8 8 16 plus 5, how much is that? 21. So net horizontal is getting 21 newtons, isn't it? So that means the resultant vector will be nothing but along the horizontal direction, and its net value will be how much? 21. So R vector has 21 I cap. So R vector is just 21 I cap, and tan theta, the angle made with the x axis, is how much? 0. Is that clear? हाँ. अच्छा अच्छा अच्छा, हमने 10 पे सॉल्व कर दिया क्या? अच्छा कोई बात नहीं, तो इसको चेंज कर लो ना, 10 ले लो. हाँ हाँ, इसको 10 न्यूटन ले लो. मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं सोचा कि 10 न्यूटन है. ठीक है, 10 ही ले लो, है ना? समझ में आया? ठीक है, इज दिस क्लियर? ठीक है, तो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू हैंडल ऑल द डिफरेंट काइंड्स ऑफ रेजोल्यूशन. नाउ बहुत लोग इसमें 4 वेक्टर फॉर्म भी देते हैं, बट वो फालतू का, मतलब ऐसा ऐसा रिप्रेजेंटेशन हो जाता है एंड ऑल, इजंट इट? ठीक है, तो अपन लेट अस डिस्कस now something more about these vectors. So first we got to know how to write our vectors. Then
We got to know unit vector, then we got to know rectangular components, then its position and displacement, then resolving our vectors, then resolutions, finding the direction, cosines and all, isn't it? The next form which we are going to discuss is starts with a statement that a vector remains invariant under translation anywhere in the universe. क्या है क्या बोल रहा है कि a vector remains invariant under translation anywhere in the universe means what happens is that whenever you make a vector to go anywhere, like if this is my vector, I brought it over here, then its magnitude and direction should not change. Are you able to get me or not? So translation means moving of the vector in the same direction. Okay. And invariant means does not changes its magnitude or direction. Are you able to get me on? Now the question arises that is it also there for the two vector form or three vector form or something like that? The answer is no. This statement is only for a single vector which you are considering in any kind of a given Cartesian plane or given kind of a XYZ coordinate system. Are you able to get me or not? That whatever you do, the vector's magnitude and direction will not even change. Let's suppose I draw a vector over here, which was 5 Newton and it is going towards I cap. If we bring it over here, it's still 5 Newton and it's still I cap. Is that clear or not? Are you able to get me? Take. So then the question arises, then what happens for the two vector form? So look over here. Give the first important case, angle between two vectors. ठीक है कि first thing to define about invariance or something like that, first we need to define the angle between any kind of two vectors. Look over here. Let's suppose if I draw a vector like this way, vector A and vector B. Then if I give this as angle theta, this is just angle theta or not? Are you able to get me? Is that clear? This is angle how much? Theta. अब पॉइंट ये आता है कि the question is very very important to understand that whenever you are going to consider the angle theta, the statement is whenever we are going to consider angle between any two vectors, then whenever we are going to consider angle between any two vectors, then it must be that our two vectors must start from same point. अगर तुम्हें किसी भी दो वेक्टर के बीच में एंगल बताना है तो those two vectors must be starting from the same point, then only you are going to or you will be able to talk about the angle between the vectors. Are you able to get me or not? So look over here. जैसे मान लो अपन ने ये वेक्टर मान लिया, जैसे एक वेक्टर A दिया हुआ है and this is my vector B. This is vector A and this is vector B. Are you able to get me? और इनके बीच में कुछ एंगल दिया हुआ है अल्फा. तो अल्फा can also be considered and you look over here, I can extend this vector in the backward direction or not.
then this angle can also be considered but in opposite vector form. Are you able to get me? क्या मेरी बातें समझ में आई? दूसरा पॉइंट ये है कि एक क्वेश्चन दिया जाता है, एक क्वेश्चन आया था कि मान लो अगर दिस इज वेक्टर ए and this is vector b. Okay, now tell me what is the angle between the two vectors. If this is 75 degree, what will be the angle between the two vectors? क्या होगा? अब हमें क्या करना पड़ेगा? कैन वी डायरेक्टली राइट इट? नो ना. कैन आई जस्ट सेंड दिस वेक्टर बी ओवर हियर, फॉरवर्ड मूव करा सकते हैं? नहीं. नहीं, हमें दोनों वेक्टर को सेम पॉइंट से स्टार्ट करना है ना. तो टेल से टेल कैसे मिलेंगे? टेल से टेल तभी मिलेगा ना जब इस वेक्टर को बी को यहाँ पर लाओगे, पैरेलली शिफ्ट करोगे. समझे? तो दिस इज वेक्टर ए. हाँ, तो अगर मान लो ये पहले 75 था तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 75. Are you able to get me? तो angle between the vectors you have to always start considering from the tail of the vectors. Is that clear? ठीक है? Are you able to get me or not? ठीक है. या फिर एक और पॉइंट है कि अगर मान लो जैसे ये वेक्टर दिया हुआ है कि अगर तुम इसको लेकर यहाँ पर आते हो, मीन्स इफ यू ब्रॉट दिस वेक्टर बी ओवर हियर, then you have to consider this angle because that will be the angle over here. ठीक है? Are you able to get me? हाँ, दोनों में सेम आएगा. बट एक एग्जांपल देता हूँ. जैसे ये बताओ, जैसे ये वेक्टर दे दिया, दिस इज वेक्टर बी and this is vector a and the angle between them is 30 degree. अब बताओ, find the angle between the vectors. हाँ, 150 और 60. 150. तो हमें क्या करना? बेसिकली हमने किया क्या? I just transported this vector over here, isn't it? तो ये एंगल कितना है? 150 है ना. देयरफॉर एंगल बिटवीन वेक्टर्स इज 150. तो मैं हरदम क्या करना है? ऑलवेज स्टार्ट कंसिडरिंग द वेक्टर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट, and if you can consider that then you know the angle between the vectors basically. Is that clear? ठीक है ना. So this was all about your angle between the vectors, resolving to vector form, direction, cosines and everything. ठीक है. तो अपन इसको आज यहीं पर रखेंगे, है ना. एक मिनट, इसको